These are by the way of exchange of MOUs, declarations, terms of references, treaties, cooperation program, and joint release of a postal stamp. First, we shall witness the exchange of two documents. These are the Declaration on the Establishment of Strategic Partnership between the Republic of India and the Republic of Philippines, and the Plan of Action for Implementation of Strategic Partnership between the Republic of India and the Republic of Philippines, 2025-2029. These would be exchanged together by Her Excellency Ms. Teresa Lazaro, the Secretary of Foreign Affairs from Philippines, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. Ministers, please. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of three documents. These three are the terms of reference between the Indian Air Force and the Philippine Air Force on air staff talks, the terms of reference between the Indian Army and the Philippine Army on the Army-to-Army staff talks, and the terms of reference between the Indian Navy and the Philippine Navy on the Navy-to-Navy talks. These will be exchanged all at once by His Excellency Mr. Gilberto Teodoro Jr., the Secretary of National Defense on Philippines, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. Thank you, Ministers. Next, we have exchange of two more documents together. These are the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Philippines, and the Treaty on Transfer of Sentenced Persons between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Philippines. These will be exchanged together on the Philippine side by His Excellency Mr. Jesus Crispin Remulla, Secretary for Department of Justice, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of program of cooperation in the field of science and technology for the period 2025-2028 between the Department of Science and Technology of the Republic of India and the Department of Science and Technology of the Republic of Philippines. These would be exchanged on the Filipino side by His Excellency Mr. Renato Solidum Jr., the Secretary for Science and Technology, and on the Indian side by Shri Pabitra Margarita, Minister of State for External Affairs and Textiles. Thank you, Ministers. We next have the exchange of the implementation program between the Department of Tourism of the Government of Republic of Philippines and the Ministry of Tourism of the Government of Republic of India on Tourism Cooperation 2025-2028. This would be exchanged on the Philippine side by Her Excellency Cristina Frasco, Secretary for Tourism, and on the Indian side by Shri Pabitra Margarita, Minister of State for External Affairs and Textiles. Thank you, Ministers. We next have the exchange of the Memorandum of Understanding between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Philippines on the cooperation in the field of digital technologies. These would be exchanged on the Philippine side by His Excellency Mr. Henry Royal Aguda, Secretary for the Department of Information and Communication Technology on the Philippine side, and on the Indian side by Shri Pabitra Margarita, Minister of State for External Affairs and Textiles. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of the Statement of Intent between Indian Space Research Organization, Republic of India, and the Philippine Space Agency, Philippines, on cooperation on the peaceful uses of outer space. This would be exchanged on the Philippine side by Dr. Gay Jane Perez,
Deputy Director General of Space Sciences and Technology, Philippine Space Agency, and on the Indian side by Shri Vikram Misri, Foreign Secretary, Minister of External Affairs. Thank you, Secretaries. Next, we have the exchange of terms of reference for enhanced maritime cooperation between the Indian Coast Guard and the Philippine Coast Guard. This will be exchanged on the Philippine side by Admiral Ronnie Hale Gavan, Commandant Philippine Coast Guard, and on the Indian side by Shri Rajesh Kumar Singh, Defense Secretary. Thank you, sir. And the last document to be exchanged today is the cultural exchange program between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Philippines. This would be exchanged on the Filipino side by Mr. Victorino Manalo, Chairman, National Commission for Culture and Arts, and on the Indian side by Shri P. Kumran, Secretary East, Ministry of External Affairs. Thank you, sir. We shall now witness the joint virtual release of postal stamps from the two countries commemorating the 75th anniversary of India-Philippine diplomatic relation. I request the leaders to jointly press the green button, please. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the External Affairs Ministry to command the rest of the proceedings. Thank you. Namaskar and good afternoon. Your Excellency, Mr. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of Philippines, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, राष्ट्रपति जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, माबूहाय। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी का और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ष भारत और फिलीपींस अपने डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस संदर्भ में उनकी यह यात्रा विशेष महत्व रखती है। हमारे डिप्लोमेटिक संबंध भले ही नए हैं, लेकिन हमारी सभ्यताओं के संपर्क बहुत प्राचीन काल से है। फिलीपींस की रामायण, महाराडिया लवाना हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का जीवंत प्रमाण है। अभी जारी किए गए डाक टिकट, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय पुष्प हैं, हमारी मित्रता की महक दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, हर स्तर पर संवाद, हर क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से हमारे संबंधों की पहचान रहा है। आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। हमारा बायलैटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए
इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है। इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स, हर सेक्टर में हमारी कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। विज्ञान और टेक्निक के क्षेत्र में वायरोलॉजी से लेकर एआई और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तक जॉइंट रिसर्च चल रही है। आज संपन्न हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन प्लान से इसमें और गति आएगी। वाराणसी में स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर अल्ट्रा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इस वाले चावल पर काम कर रहा है। यानी हम साथ मिलकर स्वाद और सेहत दोनों पर काम कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत हम फिलीपींस में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ाएंगे और फिलीपींस में सॉवरेन डाटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी सहयोग देंगे। धरती पर तो हमारी साझेदारी मजबूत है ही और अब हमने अंतरिक्ष की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आज समझौता भी किया गया है। फ्रेंड्स, मजबूत हो रहे रक्षा संबंध गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मैरीटाइम नेशंस के रूप में दोनों देशों के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हम मिलकर काम करते रहे हैं। आज जब राष्ट्रपति जी भारत में हैं, भारतीय नौसेना के 3 जहाज पहली बार फिलीपींस में नौसैनिक एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। भारत की हाइड्रोग्राफी शिप भी इसमें जुड़ी है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए भारत में बनाए गए इंटरनेशनल फ्यूचर सेंटर से जुड़ने के लिए हम फिलीपींस का स्वागत करते हैं। पहलगाम आतंक के हमले की कड़ी निंदा करने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए हम फिलीपींस सरकार और राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन्स के विषयों पर आज हुए समझौतों से हमारी सुरक्षा साझेदारी को और बल मिलेगा। फ्रेंड्स, भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री देने के फिलीपींस के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। भारत ने भी फिलीपींस के पर्यटकों को फ्री ई वीजा सुविधा देने का फैसला लिया है। इस साल दिल्ली और मनीला के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करने के लिए काम किया जाएगा। आज संपन्न किए गए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन में फिलीपींस एक अहम साझेदार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन करते हैं। अगले वर्ष फिलीपींस आसियान की अध्यक्षता करेगा। इसकी सफलता के लिए हम पूरा सहयोग देंगे। एक्सेलेंसी, इंडिया एंड द फिलीपींस आर फ्रेंड्स by choice and partners
by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Our is not just a friendship of the past, it is a promise to the future. Maraming Salamat po. Thank you, sir. May I now